Hey guys, what's up? My name is Divyansh and welcome back to the channel. This is the part 3 of the video editing series. And last time we discussed how you can import your data into project tab, how to make a sequence, how you can trim your videos. Basically we discussed how to start editing your videos in Premiere Pro. And in this video we will be learning more about the timeline. We will be seeing different features that are present on the timeline. Also we will be learning more about audio and video layers. So now let's move into the software. तो टाइमलाइन को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं. टाइमलाइन का ये जो ऊपर वाला पार्ट है, दिस इज फॉर वीडियोस. लाइक आप यहाँ पर वीडियोस को ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, लाइक एनीथिंग यू कैन ऐड हियर एक्सेप्ट फॉर द ऑडियो पार्ट. और ये जो आपको हॉरिजॉन्टल रोज दिख रही हैं, दीज आर कॉल्ड लेयर्स. तो जैसे ये वीडियो लेयर 1 है, ये वीडियो लेयर 2 है, यहाँ पर मेंशन भी है V1 एंड V2 एंड सो ऑन. एंड सिमिलरली इसका नीचे वाले पार्ट में ये ऑडियो 1, ऑडियो 2 एंड ऑडियो 3 हो गया. अब आपको यहाँ पर ये आई वाला आइकन दिख रहा होगा. अब ये आइकन एक वीडियो लेयर को हाइड करने के लिए यूज होता है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम इसको क्लिक करते हैं, सी अब हमारी वीडियो हाइड हो चुकी है. एंड इफ वी अगेन क्लिक हियर, देन वीडियो वापस आ जाएगी. एंड दिस आइकन ओवर हियर विल लॉक योर वीडियो लेयर. लाइक अगर हम इसको क्लिक करते हैं, देन वी विल नॉट बी एबल टू ड्रैग दिस वीडियो. And if we again click here, then it will unlock the layer and now we can drag this layer like this. Similarly for the audio part, these locks will lock your audio layers, and this M icon will mute any kind of audio which is there. अब हम पहले एक ऑडियो ऐड करते हैं, like for example this music. ऐसे ऑडियो ऐड हो जाती है as we discussed in the last video, and if we play it, तो अभी ऑडियो आ रही है, right? And if we click over this M icon, then it will mute this audio layer. So if we play now, then the audio is muted. अब जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम इस टाइमलाइन को एक्सपैंड और श्रिंक कैसे कर सकते हैं, एंड दैट थिंग वी डिड फ्रॉम दीज हैंडल्स. लाइक ये जो सर्कल्स हैं, इस पर लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करना है एंड यू हैव टू लाइक ड्रैग सिंपली टू द राइट और लेफ्ट टू एक्सपैंड दिस टाइमलाइन. And similarly we can expand individual video layers and audio layers also, and that we can do with the help of these bars. अगर हम इस पे लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करते हैं and we drag to the up, then it will expand this video layer. एंड अगर हम नीचे करते हैं तो ये वापस से श्रिंक हो जाएगा. सिमिलरली फॉर द ऑडियो, अगर हम इस पर लेफ्ट क्लिक करके इसको ऐसे ड्रैग करते हैं, देन इट विल एक्सपैंड दिस ऑडियो लेयर, और इसको अगर ऊपर करते हैं तो इट विल श्रिंक द ऑडियो लेयर. दिस वी कैन ऑल्सो डू बाय डबल क्लिकिंग इन दिस पैनल, इन दिस लेयर सेक्शन, एंड इफ वी डबल क्लिक हियर, then it will expand this layer, and if we again double click here, then it will shrink this video layer. Now if you want to add more video or audio layers in this timeline, then first let's shrink this video layers section like this. And as we can see that we have only 3 video layers. So if you want to add more layers, then you can simply drag up any video file like this, and it will create a video layer on its own. And similarly we can do this for the audio part. Now we have another way also to add layers. So we have to right click over this panel, and here we can see the option to add or delete any track. Track is same as the horizontal layers that we talked about. If we click add tracks, तो अब यहाँ पे हम खुद उसकी प्लेसमेंट कर सकते हैं कि हमने किसके ऊपर या किसके नीचे ट्रैक ऐड करना है. तो यहाँ से भी हम ट्रैक ऐड कर सकते हैं. Otherwise if we want to delete any layer, then we have to click on that layer only in this panel, and we have to right click and then delete track, so it will delete that track. Okay, so now if you look at these mic icons over here, then these are used for voiceovers. So if you want to add any kind of voiceover, and maybe you want to add a sound effect that you are recording, so you can simply click over this icon and it will show you a timer of 3 seconds, and then it will start recording your voice. And if you want to pause it, then you can simply hit enter. तो उसको एक बार ट्राई करके देखते हैं. एंड नाउ लेट्स म्यूट दिस ऑडियो लेयर. वी नीड टू ऐड अ वॉइस ओवर ऑन द सेकंड वीडियो लेयर, सो वी विल क्लिक द माइक आइकन विच इज एट द सेकंड ऑडियो लेयर. तो उसको क्लिक करते हैं एंड इट विल शो अ टाइमर ऑफ 3 सेकंड्स, और अब ये स्टार्ट कर देगा. सो इफ यू वांट टू स्टॉप, यू कैन प्रेस एंटर. सो in this way you can add any kind of voiceovers in your timeline.
Now let's take an example of a video file which also has an audio. तो मैंने यहाँ पर एक ये वीडियो इंपोर्ट की है and now let's drag it on the timeline. तो as you can see that this video file also has an audio in it. अगर अब मैं ट्राई करता हूँ कि इस वीडियो को मैं मूव करूँ तो आप देख सकते हैं कि इसकी ऑडियो भी इसके साथ ही मूव कर रही है. It is because these both audio and video layers are linked with each other. And if we want to move only a single layer, maybe audio or video, then we need to unlink them. And this we can do by right clicking over this video layer, and here we will choose unlink. So now if I move this, then you can see only the video layer is moving and not the audio one. So that's all for today's video, and I hope you learned something new. And if you really enjoyed this video, then consider sharing it with your friends. There are more videos coming soon, so make sure you are subscribed to the channel, and I'll see you in the next video.